Hello students, me Renu, your maths teacher. Today we will discuss our second question of exercise 3.3 of chapter Understanding Quadrilaterals of grade 8. Clear? So you have this parallelogram in which you have given this angle 30 degree and one angle this is 90 degree. And you have to find the values of x, y and z angles. So finding angles in a parallelogram, you have to remember its properties. Parallelogram होता क्या है? क्या उसमें properties हैं? Its properties are its opposite sides are equal and parallel, and its opposite angles are also equal. Adjacent angles का sum क्या होता है? 180 degree. Clear? So let's start. You have this parallelogram. You have not given the names, so write your names yourself. Write A, B, C, D. And its diagonal AC and BD intersect at point O. Clear? So now you have given that angle AOB, this angle AOB, this is 90 degree. This angle and X, these are equal because diagonals intersect each other. So COD and AOB, these two angles are equal. So in parallelogram, let's start solution. In parallelogram ABCD, angle AOB is equal to angle COD. Why? Vertically opposite angles. Clear? So this AOB is 90 degree. So this angle COD is 90 degree. Clear? Because angle AOB is equal to 90 degree we have given. So we putting the value AOB is 90 degree, COD as it. So this implies angle COD is 90 degree. Clear this? Now we taking this triangle. अब हमें x को पता चल गया. This is 90 degree also. ये पता चल गया 90. अब हमें क्या निकालना है? y फाइंड आउट करना है. Now this triangle COD, in this triangle, you know the sum of angles in a triangle is 180 degree. You know the two angles of a triangle, so you can finding the third angle by angle sum property of triangle. So now we're taking triangle. In triangle COD, sum of angles of triangle x plus y plus 30 degree, that is 180 degree. Y angle sum property of triangle. Of triangle. Clear? Triangle के तीनों angles का sum 180 होता है. अब x that means COD, ये हमने find out कर लिया. This is 90 degree. अब y हमें नहीं पता. 30 degree we have given this. So now 90 degree plus 30. 90 plus 30, that is 120 degree plus y. So y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 180 माइनस प्लस का 120 है. राइट हैंड साइड में लेके गई वो क्या बन गया? माइनस का. 180 डिग्री माइनस 20, दैट इज 60 डिग्री. अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई. क्लियर दिस स्टेप? Firstly we finding x by vertically opposite angles. Then we finding y in this triangle by angle sum property. Now come to z. We know that in parallelogram this AB parallel to CD, and clear, and this is it's a transversal. So these CD BA, this becomes y and z. This becomes alternate interior angles. Z बन रहा है ना? Z बन रहा है इस तरह से. और इसमें क्या आते हैं एंगल्स? पैरेलल लाइंस के बिटवीन ये एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड इन पैरेलल लाइंस these alternate interior angles are equal. So AB parallel to CD. So therefore y is equal to z. Y और z क्या है? Equal है. Y write the reason also. Alternate interior angles. Clear? These are alternate interior angles. अब y हमने फाइंड आउट कर लिया. This is 60 डिग्री. तो z भी हमारा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. Clear? I repeat it again.
you have this parallelogram, write the name yourself. Then we have firstly find this x. This is 90 degree and this x is vertically opposite angles. Two lines intersect कर रही हैं, diagonals intersect कर रहे हैं, तो ये दोनों angles क्या होंगे, equal होंगे. So this x is 90 degree. Then we taking this triangle COD in which x, y and 30. This sum is 180 degree. Three angles का sum 180 होता है triangle में. Y का sum property of triangle. X हमने 90 degree find out किया है. ये 30 है तो y हमारा क्या आ गया 90 plus 30 that is 120. 120 राइट हैंड साइड में गया 180 minus 120 that is 60 डिग्री. y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60 डिग्री. अब रह गया हमारे पास z. अब z हमारा यहाँ से हमने देखा है c d और a b पैरेलल होती है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो y and z these are alternate angles और पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं. सो y इज इक्वल टू z. y हमने 60 डिग्री फाइंड आउट किया है तो z भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री. क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.